Hello and welcome, ladies and gentlemen, to season 2, episode 4 of Beyond the Crease, a grassroots cricket original podcast. I'm your host, Behram Qazi. You can find me at Def Mango on Twitter. And the premise for today is Pakistan's history of playing Test cricket in Australia. And when I thought of this idea, no one else came to mind but the one and only Karachi Khatmal himself, Ahmer Naqvi. Ahmer bhai, thank you so much for coming on the show. And yeah, लिटरली और कोई दिमाग में नहीं आ रहा था मेरे आई वाज लाइक अहमद भाई के साथ ही करना है बहुत बहुत शुक्रिया बैरम। काफ़ी मेरे लिए दुख की बात है कि लोगों की नज़रों में मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ चुका हूँ। ये मेरे बिल्ले हैं सिगी। सिगी, you're not on this podcast. But thank you for having me. Don't love Australia or Australian cricket, but मैं उसके बारे में बात तो कर सकता हूँ काफ़ी। Absolutely, and it's a big pleasure to have you on our show. And just before we get into the details of the several test matches that Pakistan has played down under, what's your first memory of Pakistan playing test cricket in सबसे Australia? पहली the World Hmm. Cup. So the '92 World Cup. I was 8 years old, and the '92 वर्ल्ड कप ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में था, यानी कि पाकिस्तान में वो सुबह सुबह के वक्त आता था, खासतौर पर अगर डे मैचेस हो। एंड सो जो सबसे पहला मैच था '92 वर्ल्ड कप का वाज न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड में मैच हुआ था और उस वक्त ऑस्ट्रेलिया दिफाई चैंपियन थे। ऑब्वियसली वर कंसिडर्ड मेजर फेवरेट्स। और पीटीवी वाज द ओनली चैनल इन पाकिस्तान। जब मैं बाय द वे इस प्रोग्राम के लिए मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे सही अंदाजा हो रहा था कि मैं कितना बुढ़ा हूँ, क्योंकि कई हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो अब आजकल के बच्चों को शायद समझ भी ना आए। तो उस वक्त मिसाल के तौर पे एक ही टीवी चैनल था, पीटीवी, और ऑब्वियसली पाकिस्तान हुकूमत उसकी सेंसरशिप भी करती थी। तो जब मैंने सुबह को टीवी खोला, एंड अगेन आई एम 8 years old, राइट? सो आई एम इन थर्ड ग्रेड, एंड तो न्यूजीलैंड उस वक्त ऑस्ट्रेलिया को ऑलमोस्ट हरा चुका था। आई डोंट रियली रिमेंबर हु वाज बैटिंग फर्स्ट, हु वाज बैटिंग सेकंड, बट जो मेरे दिमाग में आई फील जो पहली एक दो मेमोरीज हैं हैव लेस टू डू विद क्रिकेट और ज़्यादा स्कैंडलस थी। तो ये वाली जो मेमोरी थी कि न्यूजीलैंड हरा रहा था एंड दे कट टू द क्राउड, और क्राउड में न्यूजीलैंड फैंस are celebrating. I don't know what was going on because this was only on for a few seconds, but they celebrate like there's a couple of people who start kissing each other, like making out on TV, and obviously foreign PTV like cuts away from it. Then they cut back. I think it would be winning runs, yeah, winning whatever the hell was the situation. जो आखिरी वो थे, थोड़ी देर के लिए क्रिकेट आया, फिर से वापस they cut away, और obviously वहाँ summers है, लोग swim suits और bikinis और topless मर्द और ये और वो। तो पीटीवी सेंसरशिप के लिए काफी एक ये मुश्किल वक्त था। So that was literally the first time I saw cricket. I guess this was New Zealand, not Australia, but that World Cup, that was the first memory of the World Cup. That was the first match of the World Cup. Or yeah, that whole tournament obviously took place in Australia. So that was what I was watching. But उस वक्त मुझे वैसे भी कोई इतना कुछ समझ तो नहीं आ रहा था क्रिकेट का कि ऑस्ट्रेलिया में खेलने का क्या मतलब है और क्या इम्पोर्टेंस है, एक्सेट्रा। Say, so let's fast forward to 3 years from या 1992. 95-96 में पाकिस्तान की टीम ने टूर किया, टेस्ट का दौरा किया ऑस्ट्रेलिया का। दे प्लेड 3 टेस्ट मैचेस। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी हैड एन अनअसेलेबल लीड ऑफ 2-0, मगर फिर तीसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान सिडनी में जीता। इजाज अहमद scored 137. Mushi took 9 wickets in that game. But ever since, Pakistan have lost 14 consecutive test matches ऑन ऑस्ट्रेलियन सॉइल। तो उस मैच की कोई मेमोरीज हैं आपकी, जो आपको क्या लगता था कि इसके बाद कभी जीतेंगे ही नहीं इतने सालों के लिए? एक्चुअली दो चीजें थी। एक्चुअली जो 93 में भी पाकिस्तान ने टूर किया था ऑस्ट्रेलिया का, और उसमें मैंने कोई टेस्ट मैचेस नहीं देखे थे, पर उसमें मुझे एक मैच याद है जो आई थिंक वाज द फर्स्ट वन डे ऑफ द टूर वेयर वी टाइड विद आसिफ मुस्तफा हिटिंग अ सिक्स ऑन द लास्ट बॉल। वो मुझे कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि उस्मान समीउद्दीन आसिफ मुस्तफा के सबसे बड़े फैन हैं, तो वो अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं। बट ऑल्सो again, like these are an 8 year old's memories, right? So at one point, Asif Mustafa gets hit in the groin, and and they go and they change his like guard, and so he like after he gets hit, he like literally takes his pants off,
एंड आई रिमेम्बर बीइंग लाइक अरे ये उसने पैंट उतार दी टीवी पे। तो वगैरह और उस पे लास्ट बॉल पे छक्के पे ऑब्वियसली तो मुझे याद है कि उस वक्त शायद वो मैच मुझे इतना अच्छी तरह याद नहीं था, बट ओवर टाइम एट द वेरी लीस्ट उसकी गुफ्तगू बहुत होती थी, पता नहीं कब होती थी, बट यू नो लाइक दैट बिकेम अ बिग थिंग। तो जब 96 वाला टूर आया एट दैट पॉइंट आई एम नाउ 13, और the 90s basically, like if you're like me who's watching cricket in the 90s, तो अब आप उस एरा को एक मुख्तलिफ तरीके से देख सकते हैं, बट उस टाइम पे ना बहुत ज्यादा वनडे क्रिकेट होती थी। यू नो देयर वाज रेगुलर सीरीज इन शारजा, लाइक एंड पाकिस्तान की बहुत अच्छी वनडे टीम थी भी, एंड we go to, like, we've already lost the quarterfinal in 96, so in the World Cup India के खिलाफ, तो काफी सारे लोग उस पॉइंट पे क्रिकेट से मायूस थे और फिक्सिंग और ये सारी बातें थी। तो जब ये टूर हुआ था तो इसमें पाकिस्तान हैड अ रियली ग्रेट वनडे टाइम, लाइक हमने फाइनल जीत लिया था। ऑस्ट्रेलिया की काफी कमजोर टीम थी, तो दोनों वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान ट्राई सीरीज में उनको हराए जा रहे थे, एंड probably I think top three Pakistan kits of all time that they wear in that, which has like a predominant blue or green, and then Yeah, there's yeah. red lettering. तो वो मुझे याद है कि उस point पे, like, that was that moment where मैं अक्सर लोगों को ये बताता हूँ कि मतलब मैं नहीं क्रिकेट खेल सकता हूँ, अच्छा नहीं क्रिकेट खेलने पे, मेरे घर में किसी को क्रिकेट देखने का शौक नहीं था, बट क्रिकेट मुझे इसलिए पसंद थी क्योंकि खास तौर पे लाइक 92 अगर आपने देखा हो तो यू कुड सी कि भाई पूरे सोसाइटी, एटलीस्ट द सोसाइटी दैट आई कुड सी, सब इसमें इंटरेस्टेड है। और 96 तक ये भी हो चुका था कि अगर आप लाइक एज आई सेड, लाइक मैं इसलिए नहीं क्रिकेट खेलता था बिकॉज आई हैड नो एथलेटिक एबिलिटी, आई वाजंट, I couldn't run fast or anything. So at that age, when you're a young boy, and like a big part of like आपकी मर्दानगी का जो परफॉर्मेंस होती है उसमें एक होता है कि आप स्पोर्ट्स के साथ या तो आप खेल रहे अच्छे, अगर आप खेल नहीं रहे तो एटलीस्ट आप देख, so I used to watch cricket a lot, and I was a big Wasim Akram fan. Wasim Akram is the captain. Pakistan does really well in this series. तो उस पॉइंट पे I think इसी सीरीज में we win a match in Adelaide. So Glenn Mishtak is bowling, and I that was the first time फिर मेरे पास ईदी के पैसे थे या जो भी थे, तो उस मैच की मैंने जाके VHS खरीदा था। So there was a store in Karachi called Pakistan Sports. I wrote about it for Crick Info, and so it was basically a physical YouTube, right? Like आप उस दुकान में जाते थे and they used to record like all of Pakistan matches and the highlights. तो I need to emphasize this कि आपने अगर मैच लाइव नहीं देखा तो फिर दिन में 3 दफा खबरें आती थी, उसमें कोई ढाई 30 सेकंड 1 मिनट के लिए उन्होंने मैच की कोई क्लिप्स क्लिप्स दिखा दी आपको। So that was the only way you're going to catch it, or you wait for the newspaper the next day, then you can read about it. So to watch a match that you had seen was actually really rare. Like you couldn't just YouTube पे गए या अपने save कर ली या जो कुछ भी। तो वो series I think was really crucial in my fandom, because खास तौर पे जब हम 96 में हारे थे तो many elders would be like कि अरे तुम्हारी टीम ने सट्टा कर लिया फिर से, तुम्हारा वसीम भाई सट्टेबाज ये वो। तो काफी ज्यादा एक एक डाउन पॉइंट था अर्लियर दैट समर। तो फिर देन पाकिस्तान डूइंग वेल इन दिस वनडे सीरीज वाज इम्पोर्टेंट। और क्योंकि मैं 13 साल का था तो मुझे कोई खास टेस्ट समझ नहीं आते थे। मैंने इवन दो लाइक 92 में जब पाकिस्तान इंग्लैंड गया था, दैट वाज अ सीरीज आई फॉलोड रेडियो रेडियो पे, बट मतलब कोई खास तमीज नहीं थी टेस्ट देखने की या समझने की। और खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया के मैचेस इतने ऑड आवर्स पे शुरू होते थे तो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखे थे आई थिंक। सो आई हैड नो आइडिया लाइक अदर देन रीडिंग अबाउट इट कि this Sydney test would be the last time in my life that Pakistan would win a test match in Australia. Would be the last time Pakistan would even, Yeah. like, we didn't even draw after that. So I wish I had like उस वक्त मुझे किसी चीज का अंदाजा होता है या कुछ मैंने एंजॉय किया होता है या कुछ, but I don't even think मैंने वो मैच देखा था। Sadly, which means के Right, right. जो मैंने सारे मैचेस देखे are horrible. वाकई यार, I mean, I was 1.5
95 का जो टेस्ट मैच जीते हैं सिडनी में, दिसंबर था आई रेकन। तो मैंने तो वो ऑब्वियसली नहीं देखा, तो लाइक यू, एवरी टेस्ट मैच दैट आई हैव सीन पाकिस्तान प्ले इन ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान हारी है। और अभी मैं व्यूअर्स और लिसनर्स को जरा ट्रिगर वार्निंग दे दूं, because we're about to discuss three occasions where Pakistan came close ever since. So this podcast is not for the faint-hearted. If you want to leave, now is the time. और 99 होबार्ट, अब तो अमर भाई आपकी थोड़ी उम्र भी हो गई होगी, यू मस्ट अंडरस्टैंड टेस्ट क्रिकेट रियली वेल। Saki gets a sixer in the first innings and Inzi then scores 118. ऑस्ट्रेलिया चेसिंग 369 इन द फोर्थ इनिंग्स, अभी सीरीज 1-0 लीड कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है ये। और 369 तो अभी भी काफी स्कोर है टेस्ट क्रिकेट में, इवन दो बैज बॉल ने काफी दफा इस तरह के स्कोर चेस कर लिए, मगर इस तरह का स्कोर आप सोच नहीं सकते कि अगली टीम चेस कर जाएगी, वो ऑस्ट्रेलिया ही क्यों ना हो। और फोर्थ इनिंग्स में पाकिस्तान have effectively reduced Australia to 126 for 5. इन स्टेप्स एडम गिलक्रिस्ट, साथ जस्टिन लैंगर खड़े हुए हैं, जस्टिन लैंगर की निक होती है, ही डजंट वॉक, ही इज नॉट गिवन आउट, दैट्स अ बिग मोमेंट। एंड देन बोथ ऑफ दोस गाइज स्कोर बिग हंड्रेड्स एंड विन द गेम फॉर ऑस्ट्रेलिया बाय 4 विकेट्स। तो क्या थे सीन्स उस टाइम पे, क्या माहौल था, किधर बैठे देख रहे थे आप ये सब हमें कुछ? बहुत अच्छी तरह याद है। और अगर इनफैक्ट आई थिंक इस लम्हे को सही तरह से समझाने के लिए आई वांट टू गो बैक इन हिस्ट्री अ लिटिल बिट, बट आल्सो आई थिंक शुरू में मैं एक बात यही कहना चाहूंगा कि अभी दुनिया में हमेशा दुनिया में कुछ ना कुछ बुरा हो रहा होता है, पर खास तौर पे भी बहुत कुछ हो रहा है, और खास बिलखुसूस फ़लस्तीन में। और जब मैं इन मैचेस के बारे में ये प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरे दिमाग में यही था कि जितना भी ये ट्रैजिक था और सैड था या व्हाटएवर, अल्टीमेटली इट्स जस्ट अ स्पोर्ट, और एक एक यही फ़ायदा होता है कि ज़िंदगी के जो असली गम होते हैं, जो असली मसले मसाइल होते हैं, for some people sports is a way of like being in denial, for some people it's an escape, for some people it's a source of hope, but whatever it is, it's not the real world. um so that I think it's important to keep that perspective in there. दूसरी बात, अब अगर हम इसकी तरफ आए, तो मैंने एक दो जगह और आई थिंक एक दफा लिखा है, एक दो जगह पॉडकास्ट पे बात की है, आई कांट रिमेंबर वेयर, बट 99 वाज अ रियली रियली इंपॉर्टेंट ईयर इन माय लाइफ। 99 में मैं 16 साल का, आई टर्न 16 दैट समर। उस साल के शुरू में पाकिस्तान गोज टू टूर इंडिया, and as I said, like I still, I'm 15 in 10th grade, और हमारे स्कूल में Saturdays को they would take us to different kind of basically places where we were supposed to do social work. हॉस्पिटल था और एक रिटायरमेंट होम था, एक्सेट्रा। उसको हम ये इंटर्नशिप कह रहे थे, बट उसमें कुछ खास करने को होता नहीं था, वो इदारों के पास वैसे ही अपना एक, they had a system, they didn't really need like 15-year-olds for a few hours a week. तो most of the time you weren't doing anything, और फिर हमने ये, वो करीब करीब थी, तो what we started doing was कि हम बंक करते थे, रिक्शा लेते थे, एक जगह किसी घर पहुंच जाते थे। मेरे लिए एटलीस्ट, क्योंकि हमारा स्कूल एक बहुत छोटी सी बिल्डिंग में था, बंक करना wasn't that easy, और मैं काफी पप्पू बच्चा था, तो ये मैं पहली दफा बंक करता हूँ। मैं पहली दफा जब बंक किया, तो हम अपने एक दोस्त के घर गए, और दोपहर का वक्त हो रहा था, हमने टीवी लगाया, और उसी वक्त शोएब अख्तर की स्पेल शुरू हो रही थी कोलकाता में, where he gets Dravid and Sachin. So like, I think universe मुझसे कह रही थी कि you don't have to follow life following the rules या being like a good person, क्योंकि अगर आप बंक करते हैं, you get to watch like शोएब अख्तर bowl out Sachin first ball. And that is the kind of एटीट्यूड जो 15-16 साल की उम्र पे आपको होता है, कि आप पहली दफा सोच रहे होते हैं कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। एंड आई ऑल्सो दैट ईयर आई स्टार्ट डेटिंग, बहुत ही कोई शरीफ तरीन वो सिचुएशन थी, बट मेरी पहली रिलेशनशिप थी। एंड दैट समर पाकिस्तान plays possibly like the best World Cup it's played. It's a really, really fun World Cup. Pakistan's kit looks amazing. We win this amazing match against Australia. But उसके अलावा 99 वैसे भी ना और चीज़ों में आप देखें तो बहुत बड़ा साल है। तो एक चीज़ जिसमें अगेन बैक इन दैट डे, अब जैसे मूवी आती है तो पाकिस्तान में तो सिनेमा में भी अब मूवीज लग जाती है उसी टाइम पे जो बाहर लगती है, राइट? उस जमाने में सिनेमा में रेयरली कुछ लगता था, और अगर कोई नई मूवी आती थी तो या तो वो स्मगल होके कैसेट आए,
तो अक्सर प्रिंट खराब होता था या एक ऑफिशियल लाइसेंसिंग के थ्रू आती थी, बहुत कम मूवियाँ आती थी, वो भी साल भर बाद आती। So I know that 99 में जो movies निकली हॉलीवुड में, I didn't probably watch most of them that year, but it was a landmark year for movies in Hollywood. A lot of them that would go on to become like some of my favorite movies, like The Matrix comes out in 99. There is Fight Club comes out in 99, and The Green Mile and Cruel Intentions, Notting Hill. But then बहुत सारी Austin Powers came out, Office Space came out. So there's like it was a very creative kind of time, but it was also like I was discovering all these new pop culture things. It was, but there's a whole genre of coming of age kind of movies and stories. So उनके अक्सर कुछ cliches होते हैं, और I feel that that year was very much, you know, कि, like पीछे आपके कारगिल war and then Musharraf's coup happens. There is like as I said, I'm turning 16. There's a lot happening in me for in my personal life as a teenager. There's Pakistan having this crazy year in cricket, and all of those things are kind of coming together. And so when the Australia tour happens, तो उस वक्त तक मैं I'm in my O level second year, so हम लोग उस साल इम्तिहान देना था, and हमारी एड मैथ्स की क्लास होती थी with Sir Asif, and Sir Asif was like he was like 6'2" or something, सफेद बाल थे उनके, और वो चप्पल पहन के आते थे, and he was like very much मैथ्स का जो क्लीशे होता है, like a cranky genius, कि छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा आ जाता था, गालियां बहुत दे देते जो हमारे स्कूल में बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी, और yet he was also like really damn good as a maths teacher, so you really wanted to like impress Sir Asif. Or Sir Asif, now that I look back at it, was unraveling that year. Like by the end of the year, like he was selling calendars that were supposed to raise money for Mujahideen in Bosnia. So not for charity effort, specifically for war effort in Bosnia. And he'll be telling us कि Bosnia में उन पे गोलियां चलती हैं, तो फरिश्ते आके गोलियां रोक देते हैं, और फरिश्ते ऊपर से आके ये करते हैं, जो बाद में आपको पता चलता है कि हर जंग में ऐसा कुछ हो रहा होता. So I feel Hobart is the turning point. Like before Hobart, I remember Sir Asif was this like really cool guy, and after Hobart, like he kind of started losing it. Unfortunately, after like a few years later, he had to retire because of his health. But I woke up with a Gaba match. It's like 3 in the morning or something. Or Mohammad Wasim, who'd scored like this really great innings on debut versus New Zealand. उसने पहले सेशन में I think McGrath hits him on the chest, and he kind of, वो जो ऑस्ट्रेलियंस बड़ा खुश होते हैं कि रब नहीं किया और ये वो फलान का ना, और वो थोड़ा सा, I don't remember if he rubbed it or not, but he takes it on the chest and he keeps playing, and I'm just like, oh, we're in this. And then that first test, Pakistan loses, but we actually score runs. Or looking at the scorecards from the previous two tours, and I feel like ये मेरी उस वक्त तक एक बड़ा strong bias था कि हमारी batting always lets us down, and the Gaba we don't win because Australia bats better than us, our bowling isn't great. Magar, okay, great, we're putting up runs, and so we come to Hobart, and I think the Hobart का time difference है कुछ ऐसा पड़ रहा था कि मुझे जो सर आसिफ की क्लास होती थी ब्रेक के बाद, which means like 12:30 से 1:30 तक, और उससे पहले तक, यानी हम लोग स्कूल आ जाते थे 8 बजे. So I'm assuming that like by that time, I tried to look it up. I can't tell कि session कब था, but at that time people had seen, लोग सुबह को देख के आए थे कि विकेट गिर चुकी हैं, और फिर स्कूल में एक दो लोगों के पास रेडियो होता था, which was the only way to get live scores. तो I think हमारा एक one of the guys at the gate who worked for the school, he had a radio, तो लोग जा जाके पूछ रहे हैं क्या सीन है, और as you said, like 5 for 126 or something. And we're all like, I remember that we're all at this point like old enough to understand that test match in Australia इतनी बड़ी चीज है. It was also कि 90s पूरी गुजर चुकी थी, और decade शुरू हुई थी as world champions. And in the middle of the decade, there was huge fixing scandals, and it had really tested your fandom. तो अब इस मरहले पे आके, इस पूरे साल जहाँ आपने इंडिया को इंडिया में शिकस्त दी, फिर वर्ल्ड कप फाइनल खेला, ऐसा लग रहा था कि अब
ये सारी जितने साल हमने इंतजार किया, अब हम ये 90s की टीम पूरी दुनिया को दिखाएगी कि इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम्स ऑफ ऑल टाइम, राइट? बिकॉज मेरी नज़र में और Hmm. मुझ जैसे लोगों की नज़र में दैट वाज व्हाट इट फेल्ट राइट अप टिल देन। एंड सर आसिफ इज लेट टू क्लास, और आई रिमेम्बर कि हम क्लासरूम से बाहर खड़े हुए ऐसे वेट शेट कर रहे हैं कि क्या सीन है, सर नहीं आए ये वो। और 2-3 लोग जो क्रिकेट की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यार घर जाके अल्लाह करे हाइलाइट्स देखने को मिले, यार हम पाकिस्तान की विन नहीं देख रहे ये वो। और सर आसिफ कम्स इन एंड पहले ना वो गालियां जो देते थे तब भी लाइक दे वर बैड, बट यू गट कमीना, उल्लू का पट्टा, ऐसी गालियां दे रहे थे। उस दिन वहां थे Hmm. और कह रहे पढ़ गए बहन चोद मारे चोद, वो। और शुरू में थोड़ी थोड़ी लोग हंस रहे हैं कि वो सर गालियां दे रहे हैं वो, but he's not really making it clear why he's cursing, and then he's just like, "Haram, became vampire, like, sir, kya hua?" And then he starts telling us, "Okay." I don't remember what he told us because, obviously, from the time Langer is not out till the time they win, they score a lot of runs and there's a lot of time. So, pata nahi kya Hmm. timeline thi, but I remember by the end of the class we were heartbroken. तो या तो वो जीत चुके थे या क्या हुआ Hmm. था जो कुछ भी, बट सर आसिफ न्यू द डिटेल्स, ही टेल्स अस कि भाई वो आउट नहीं दिया, बड़े पैमाने ये वो। और आई फील कि हमें यकीन ही नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है कि आपको 240 रन चाहिए, 5 विकेटें रहती हैं, एंड यू आर प्लेइंग अगेंस्ट लाइक वसीम Hmm. एंड आई थिंक शोएब इज bowling. It was unbelievable. जैसे मतलब ये कि अभी कह रहे हो हाँ 367 अभी भी बहुत बड़ा टोटल है ये वो, but I think like in the last 10 years, like I've seen that chased enough times that like sure record breaking ये वो, but it's Hmm. happened. In the 90s जो I think पिछले 50-60 साल में is the hardest decade for batting. Uh, it is definitely one of Hmm. the hardest decades for batting in international cricket history. और उसमें fourth innings there was like I don't think any score of that nature gets played at that point at all. तो मतलब मैं आपको समझा नहीं सकता कि कितनी हैरानकुन बात थी कि पाकिस्तान की बॉलिंग ने ऑस्ट्रेलिया को आउट नहीं कर सकी। और अगेन लाइक इस वक्त तक गिलक्रिस्ट का ये दिस इज द टूर दैट ही मेक्स हिज नेम, राइट? तो अगेन अब ये सोचना कि एक बंदा 6 पे आके 7 पे आके 150 बना देता है तब भी होता है। और ऑब्वियसली गिलक्रिस्ट ने ही इसको कॉमन किया था, बट दिस हैड नेवर लाइक कि देयर वाज दिस अंडरस्टैंडिंग पर्टिकुलरली इन क्रिकेट बैक देन कि आप 6 तक मे बी मैक्स 7 तक बैटिंग करते हो, उसके बाद एवरीवन इज अ वॉकिंग विकेट, नो वन इज एक्सपेक्टेड टू मेक रन्स। Hmm. Like there was like it was really that good Australian side that emphasizes कि अच्छा 9 10 11 को भी थोड़ी आनी चाहिए या रोक लें वो, उससे पहले कोई इसका कंसेप्शन नहीं। तो ये बात समझना कि वो कितनी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी is I still don't think you can express that. And so once we lose that, I looked up the scorecard for the third test. I don't remember, anything about it. Um, I think, yeah, I don't remember anything about it. Or that, in effect, Adam Gilchrist essentially, जैसे कहते हैं अक्सर कि ना 21st century शुरू होती है 9/11 के साथ। That's when like all the things that end up defining the 21st century happen at 9/11. I feel the same way. The 90s end for Pakistan at the hands of Adam Gilchrist. Like Hmm. 99, as I said, like politically also was a really big year. Like I think 90s, um, मतलब आपने मुझ जैसे बड़ों से बहुत दफा उसके बारे में नॉस्टैल्जिया सुना होगा, बट काफी तरीकों में एक पॉपुलर कल्चर वाइज whether you talking about television, second TV Hmm. channel, पॉप म्यूजिक का एक बड़ा एरा था, दो तीन चीजें थी वो सब, that's when they all end. Everything that comes out of it comes out a few years later. मगर वो जो 90s का पूरा एरा है, that ends on that second and third session in Hobart. Um, and it ends that cricket team. It ends my age of innocence. It ends what was a really great year. Still was a great year, but really leaves a horrible taste in the mouth. And that year, I think कि back to back आपने ऑस्ट्रेलिया से दो इतनी सदमे वाले experiences लिए थे कि आप वर्ल्ड कप फाइनल हारे, where you're heavily favored to win.
and then आप ये एक मैच हारे, that at that point I think was one of the most unlikely test victories of all time. Yeah, I mean, that was quite a hard hitting anecdote. And मैं तो चलो शुक्र है सिर्फ 5 साल का था जब ये होबार्ट वाला टेस्ट हुआ. एंड आई रिमेंबर आई बिकेम एन एविड वॉचर ऑफ क्रिकेट व्हेन आई वाज अराउंड 7 8. तो 2002 2003 उस टाइम पे आपको याद होगा केबल टीवी वाज हियर और ESPN और स्टार स्पोर्ट्स इन पे बड़ा सॉलिड कंटेंट आता था. तो मैं हाइलाइट्स देख रहा था होबार्ट टेस्ट की एंड आई गॉट रियली एक्साइटेड. आई वाज लाइक, oh, this is probably one of those great Pakistan wins. And then Gilchrist and Langer, take it away from Pakistan. और वो मेरी भी कुछ थोड़ी बहुत उसकी मेमोरी उस तरह की बन गई थी. But let's move on to 2010. आपने कहा आप 99 में 16 के थे, 2010 में मैं 16 का था. और उस टाइम पे ना एक बड़ी उम्मीद थी यार कि ये जो हमारा नया बॉलिंग अटैक शेप अप हो रहा है ना, इसने दुनिया हिलाकर रख देनी है. एंड कोई ऐसा उम्मीद तो होती नहीं थी ऑस्ट्रेलियन टूर्स पे, बट फॉर सम रीजन उस टूर पे कुछ ना कुछ था कि यार कुछ करेंगे ये लड़के. They're going to stir some shit up. And Mohammad Sami in that Sydney test, that infamous Sydney test, takes wickets up front. Mohammad Asif takes a sixfer, and Australia bowled out for 127. अच्छा, अक्सर तो ये होता है ना कि आपने बोल आउट कर दी है, पाकिस्तान के साथ तो बड़ा होता है, मगर उतनी बड़ी आप लीड ही नहीं चढ़ा सके. चढ़ा दी थी 200 प्लस लीड भी चढ़ा दी है. और उसके बाद इन द थर्ड इनिंग्स you're doing well. एंड देन कामरान अकमल जो आजकल हमारे कंसल्टेंट भी हैं टू द सेलेक्टर, चीफ सेलेक्टर, वो basically he goes on to drop catch after catch after catch and basically makes that test all about himself. Whenever someone thinks of Sydney 2010, they think of Kamran Akmal behind the stumps. And Pakistan effectively allow Australia to set a target of 176, जो कि नहीं चेस कर पाते. 139 पे ही ऑल आउट हो जाते हैं. Out of all of these losses जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई हैं हमारी, is that the one that stings the most? Good question. I think कि देखो आपने स्टिंग इस्तेमाल किया ना, लफ्ज के चुभता है, राइट? तो अब ये दर्द है. अब दर्द का किरदार क्या? तो जब एडलेड में था तो ऐसा था कि किसी ने हथौड़ा लेके ना आपके पेट के अंदर मारा है. लाइक इट वाज सडन, इट वाज क्रशिंग. और वो यूं हुआ था ना कि क्योंकि ऑब्वियसली वो हमें लाइव नहीं फॉलो कर पा रहे, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो आप इस खुशफहमी में बैठे हैं कि अब नहीं तो तब पाकिस्तान की जीत का पता चलेगा. और सर आसिफ की गालियों से पता चला एक बार. शॉकिंग, लाइक अ ब्लास्ट, राइट? ये मैच इसकी जो सबसे खूबसूरत अक्कासी है, तो 2009 के एंड पे ये हुआ है. अब तो इस पे भी अगर हमें साल पे नजर डालें ना थोड़ी, तो ये साल शुरू हुआ था पाकिस्तान में श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ. और उससे पहले मतलब के 2 साल से पाकिस्तान भर में आई मीन दो क्या, उससे पहले भी 3 4 साल से हुआ था, बट ज्यादातर अनफॉर्चुनेटली खैबर पख्तूनख्वा वगैरह में था. ये अब आपके बड़े शहरों में भी, मेन स्ट्रीम शहरों के अंदर जो है टेररिज्म के बहुत बहुत सीरियस एंड ट्रैजिक अटैक्स हो चुके थे. भाई तुम्हें कुछ पता ही नहीं है पख्तूनख्वा के बारे में. तो उसके बावजूद भी ना, and this was my first job as a journalist, right? And so for TV channel, and this was all we were talking about. And I very distinctly remember that I thought that the terrorists would never attack a cricket team because that's going to be too unpopular. Which obviously वो मस्जिद उड़ा रहे थे, तो क्रिकेट टीम क्या चीज थी. बट एक दिमाग में ये I wasn't alone in this. I think quite a lot of people used to believe that. So that was like just वो जो भी आपकी नाइविटी का पर्दा था वो गिर गया था जब वो हमला होता. उसके बाद समर में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता, राइट? तो जो तुम बात कर रहे हो ना कि लग रहा था कि यार कुछ करने की, तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि आप इतने जवाल से उठ के भी वर्ल्ड कप जीत सकते हैं 2 महीने बाद. आपको तो यार कुछ भी कर सकते, राइट? और फिर ऑब्वियसली उस वर्ल्ड कप पे आमिर हैड रियली कम ऑफ एज, तो एक बड़ी उम्मीद उससे थी. आसिफ का आपको पता था पहले से. and but you had like a lot of तो जो ये तुम बात कर रहे हो ना कि पाकिस्तान का आपको लग रहा था टीम कुछ कर देगी, उसकी बहुत बड़ी वजह यही थी कि आप इतने जवाल से भी उठ के आपने वर्ल्ड कप जीत लिया था. आपके पास आमिर उस वर्ल्ड कप में डिस्कवर हुआ था, आसिफ का आपको पहले से पता था. तो एक उम्मीद तो थी. ऑब्वियसली मुझे अच्छी तरह उस वक्त भी याद है कि ऑस्ट्रेलिया के टूर से फट रही थी, बट
सोशल मीडिया का भी एक वो दौर उस तरीके में था कि मैंने खुद ब्लॉगिंग करना शुरू की थी, और बहुत छोटी सी दुनिया थी ब्लॉगिंग की, बट उस जमाने में, if I'm not wrong, I think ₹5 would do a live blog during SN Bhatt जो चला रहा था, he would do a live blog for the matches, or at least a review or something. I think वो जब भी पोस्ट करता था तो उसके कमेंट्स जो बोर्ड होता था वो essentially be what Twitter is today, के लोग बहस कर रहे हैं, डाल रहे हैं 150-300 कमेंट्स एक्सेट्रा। और उस वक्त मेरी आई थिंक उस वक्त मेरी आई डिडंट नो हिम एज येट, बट जो तुम सवाल था ना कि which hurt the most, so so as I said, like 99 was like a sledgehammer to the gut, right? 2010, Shoaib Naveed, aka Silly Titty, he watched that match. He was not in Pakistan, so I don't remember where he was, but he had something pointy like a pen or something, or a scissor, और उसी पूरी, like I think 2 innings में he kept stabbing that pillow over and over and over and over again. और because ये match is such an exquisite form of torture, because आपका पहले तो आपने runs वंस बना दिया आपके, वाह यार बड़े रन बन गए, नहीं सॉरी, पहले तो आपने उनको आउट किया तबाह करके, ग्रेट, दैट वाज अमेजिंग, बट जैसा कि आपने कहा कि लीड नहीं चढ़ती, तो आपने लीड चढ़ा दी, ग्रेट, फिर आपने यू देयर व्हाट लाइक आई थिंक they're behind and they're down 6 wickets or 7 wickets, like अभी तक उनकी लीड नहीं चढ़ी है, 6-7 विकेट गिर चुकी हैं, और फिर लीड भी कोई 30-40 रन की थी, 9 विकेट गिर चुकी हैं, या 100 रन की लीड थी आई थिंक, whatever the hell, and then Hussey and Peter Siddle put on like I don't know crazy amount, और वो 176 का टारगेट था, तो अब इट्स नॉट इनफ कि आप कहें यार ये मैच हाथ से निकल गया, और फिर उस पूरे मैच में आई थिंक at one point Umar Akmal and a bowler put a partnership, and so I think Sami or Umar Akmal की partnership है, and you're like 30 runs away or 35 39 runs away with 4 wickets in hand, and you lose those 4 wickets for 6 runs, तो वो पूरे रास्ते को 1.5-2 दिन पाकिस्तान आपको खींचता ले गया कि बिकॉज ऑब्वियसली कीप टेलिंग योरसेल्फ, हाँ भाई ये आपने इतनी क्रिकेट देखी है एट दिस पॉइंट पे कि आपको पता है कि पाकिस्तान से हाथ से मैच निकल रहा है, बट इट्स अ टेस्ट विन इन ऑस्ट्रेलिया, सो इवन इफ देयर इज अ 1% चांस आप उठ के देखना चाह रहे हैं कि यार मैं like I know people my age, a lot of us were staying up to watch के मैं बचपन से ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट देखता आ रहा हूँ और मैंने कभी जीतते नहीं देखा, तो इस दफा तो मैं देख के ही लाऊंगा, क्योंकि अभी हमने 2004 स्किप कर दिया, बहुत 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 ब्रूटल टूर था, तो 2010 में आई मीन it's crazy, like I feel many of us at that point, I think कामरान अकमल हमेशा हमेशा के लिए, उससे पहले भी कामरान अकमल की कीपिंग के ऊपर तनकीद की जाती थी, बट जो उसने वो परफॉर्मेंस दी है, एंड व्हाट्स क्रेजी टू मी इज कि 8 months later पाकिस्तान की तारीख का पॉसिबली सबसे बड़ा फिक्सिंग स्कैंडल होता है जिसमें 3 लोग जेल जाते हैं, एंड उसके बावजूद भी सिडनी to hold its own as a traumatic experience, like ये इतना बड़ा, मतलब ये लेवल है सिडनी का ना कि sure no one went to jail, but it was it was it was just absolutely the most, like वो जो अगर वो वाटर ड्रिप टॉर्चर जैसे होता है ना, कि टपक 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 पानी गिराते रहते हैं until it makes a hole in your skull, like that was what the Sydney test. Yeah, that was as traumatic an experience that I have at least experienced in Test cricket in particular. Obviously, और भी बड़े दुख हैं पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े हुए, मगर आते हैं गैबा 2016 पे। ये एज सच ट्रॉमेटिक नहीं है, ठीक है, बिकॉज दिस वाज अ गेम दैट पाकिस्तान हैड नो बिजनेस विनिंग इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया व स्टीम रोलिंग पाकिस्तान, और ये वो पाकिस्तान की टेस्ट टीम थी जो नंबर 1 बनकर आई थी यार। इंग्लैंड में 2-2 सीरीज ड्रॉ की, मिसबा ने बेसिकली वो रिपेयर जॉब कंप्लीट कर दी थी जो सलमान बट ने काइंड ऑफ काम बिगाड़ा था 2010 के अंदर से। ये सो दिस वाज एन आइकॉनिक टूर बिकॉज यू वर कमिंग ऑफ द बैक ऑफ दैट ड्रॉन टेस्ट सीरीज इन इंग्लैंड, जो कि आप जीत सकते थे। एजबास्टन टेस्ट आप जीत सकते थे इंग्लैंड में भी। खैर, कमिंग टू ऑफ कोर्स द गैबा, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया, ऑब्वियसली इंडिया बीट देम एट द गैबा लेटर, बट दैट वाज देयर फोर्ट्रेस, ठीक है। और यहाँ पे वो क्या तकरीबन 500 मार गए, and then they had set Pakistan a target of 490 as well to chase in the fourth innings, वो भी डिक्लेयर करके 202
बना लिए थे for 5, and they declared, they were like, yeah, 490 are enough. And conventional wisdom suggests that that would be enough. But Asad Shafiq had other plans. Arguably the best knock of his career. Oval wala bhi वैसे काफी अच्छा था, but I think Gaba takes the cake. And he's ultimately undone by a stark bouncer. Really good nut that he got, और फिर उसके बाद पाकिस्तान हार जाती है. I think 39 रन से ही हारे थे फिर से. So ये एक कोई नंबर बन गया एक पाकिस्तान का 39, which is kind of I don't know, cursed with respect to test matches in Australia. But anyway, had Pakistan won that game, record chase हो जाती. ठीक है, 490 आज तक chase नहीं हुआ हुआ. अगर असद शफीक टिक जाता थोड़ा और, could that have had like some sort of a butterfly effect on at least Pakistan playing tests in Australia? क्योंकि Ian Chappell का बयान आ गया था कि यार इनको बुलाते ही क्यों हो, they don't even compete, stuff like that. And then Misbah said that, well, if we don't visit frequently, how will we get better? तो एक वो सारी conversation भी start हो गई थी. But if anything, sour taste nahi aapke, it wasn't left in your mouth after that test. You felt a bit of pride. Yeah, we nearly chased down 490, and Asad Shafiq, announced to the world that he's an elite batter, which unfortunately uske bhi career mein इस तरह के ज्यादा दिन उसके बाद नहीं आए. But it's a happy memory, you'd say. Yeah, by 2016. I guess I think कि ये जो सबसे अहम बात ये थी ना कि मिसबा ने had kind of rehabilitated Pakistan, right? तो ये एक बड़ी अहम बात थी. और एक जाती तौर पे भी, क्योंकि at this point now, that by this tour, this is the first tour where like I'm very much involved in working in cricket, or and was really good friends with people who were working in cricket. The Paces Space Yard gang was like a big part of my life at this point. And we had seen Pakistan go into exile, then make the UAE a fortress, defeat England in that famous series in 2012, but then sort of make that into an identity. By 2014, you defeated Australia as well in the UAE. As you said, कि अगले 2 सालों में आप बहुत अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेल के वर्ल्ड नंबर 1 हो जाते हैं. तो उस तरीके में जब आप ऑस्ट्रेलिया इस दफा जा रहे थे, तो एक था कि यार ठीक है, प्रॉबली उनकी टीम हमसे ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, जो कुछ भी होगी, मगर इतने साल बाद हम जा रहे हैं तो एक मौका इस दफा थोड़ा नजर आ रहा है. दूसरा, जैसे कोई कहा कि इन क्या भी कहता है, इनको क्यों बुलाते हैं, जो एक तरीके में मतलब ऑन जस्ट द फेस ऑफ इट सही बात है कि कोई मुकाबला खास कर नहीं पाते थे. और उसकी वजह ऑब्वियसली क्रिकेट इज अ वेरी वेरी horribly run, extremely inequitable sport, so that's part of the answer also. मगर बात यही थी कि अब 6 साल बाद हम जा रहे थे, तो आपका ये भी था कि हाँ ठीक है यार, उसमें हमने जो 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 लो था with the fixing and everything, this is the circle, the full circle, right? So 2010, obviously, even though the fixing channel happened later, the Sydney test involves many of those characters, right? And obviously, जब एक दफा ये scandal हुआ था, तो I remember everyone looking back at 2010 and having like, yo, everyone that kind of comes in here was involved in that test, etc. So obviously वो एक knock on effect था. तो 2016, वीना मलिक की भी बयान आ गए थे, तो अगर आपको याद हो. 2016 तक, we had Ahmer back, we had Asif performing in the Qaid Azam Trophy, and I remember कि उस match, before the last day when Shafiq plays that innings, मैं ये भी ट्वीटे कर रहा था कि ये बॉलर्स को सब लोग गालियां देते हैं, और बैटर्स की कोई नो वन कॉल्स देम आउट एंड फलाना ढिमकाना. एंड देन आई वाजंट वेकिंग अप अर्ली, बट लाइक सुबह सुबह को था, और सुबह से पेसेस टंग 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 के 4,000 मैसेजेस थे बाय द टाइम आई वोक अप एंड स्टार्टेड वाचिंग. एंड we all saw Asad Shafiq get out together. तो वो मतलब वो एक नया टॉर्चर था कि I never thought Pakistan would win at Gaba. I was not interested in predicting a win at Gaba. I did not think at any point that we would be even near this total. And so, like जब इनके messages आ रहे थे, मैं उठ गया था, but मुझे था कि यार ये false hope के लिए मैं क्यों उठ रहा हूँ. And then finally I was like, fine, let's just get up and watch this match. And so then I'm also watching, and we're getting to that target, and then it falls apart. That match, as you said, कि थोड़ी बेहतर मेमोरी थी, but मेरी actually now that I was looking back at it, तो मेरी एक tweet है from 7 years ago, और जब भी पाकिस्तान कोई बहुत बुरी तरह मैच हारता है, तो people start retweeting it again. And
Um, it's not like I just because I feel that, like, I'll read out the tweet to you. Right? Where is it? Is when I have kids, I'll get them hooked to cocaine and heroin at a young age, so they never get involved in an addiction as fucked up as Pakistan. And this happened when Pakistan obviously got all out in a session at the MCG. एक draw हुआ match हम हार गए थे. और and so in the spirit of masochism and research, uh, I went on YouTube's advanced search, found all my tweets from that period, and it's so funny. क्योंकि मतलब पहले मैं बिल्कुल उदास हूँ, फिर मेरी उम्मीद आ रही है, like both in this Gaba match and this match, I go from like being really sad and then being like, oh my god, I can't believe Pakistan has done this. Oh my god, this is crazy. And then, just absolute pits. So the first match, the tweets aren't so sad, but the second match is just completely I think इस दफा मैं दिल इतना टूटा नहीं था, वही मैं कह रहा हूँ, अपने आप पे नफरत आ रही थी कि भाई तुमने 33 साल अपनी जिंदगी जाया कर दी इस सब बकवास में. And I think, it's around this time that like I really start thinking about very seriously कि हम लोग क्यों देखते हैं sports. क्योंकि इस इन मैचेस के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि भाई आपकी टीम जीतती, किसी भी टीम बहुत कम जीतती है सिवाय एक दो लोगों की fandoms के. Everyone's team usually loses a lot. You don't get that much glory, and you put up to like a lot of heartbreak. And it doesn't seem like you're watching for the hope के glory आएगी, because that's doesn't pay off. तो एनीवेज ये एक मुख्तलिफ गुफ्तगू है, मगर इस दिस मैच दिस सीरीज जिसमें मैंने सोचा था कि बस अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे कोई उम्मीद नहीं होगी ऑस्ट्रेलिया के मैचेस से, मुझे कुछ नहीं होगा, बट देन पाकिस्तान डजंट लाइक 6 year स्लो कॉन ऑफ मेकिंग यू बिलीव कि यार ये टीम अलग है, ये फर्क है, इस दफा हम बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट्स हैं. और सबसे मायूस कुन बात थी, और जो डे वन पे ही समझ आ गई थी कि probably since like Javed Miandad, like your smartest cricketing brain, takes on Australia with the most bizarre fielding setup. I think Yasir Shah has like a 3-6 field, which I will never understand till the day I die. Even though at one point Rehan and I during PSL2 asked Misbah to explain it to us. मिसबा जो है, हम लोग नाश्ता करते थे, और वो बीच नाश्ते के दौरान खड़ा हो गया, देखें जी पहले स्टीव स्मिथ ये करता है, और इतनी देर तक बोलता रहा स्टीव स्मिथ. आई मीन मिसबा एंड रेहान एंड आई बोथ हैड टू गेट टू द स्टेडियम, वेयर लाइक जी 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 no, hey, can you please stop? And I didn't get it then. I don't get it now. I don't think I'll ever get it. Like the one captain who's amazing at strangling teams and choking run rates gives his leggy a 3-6 field at the start of a test series. नाकाबिले यकीन था. And yeah, like it was a very new kind of pain. I hadn't seen Pakistan bat this well in Australia and still end up 3-0. That was I applaud the script writers for bucking genre trends, and एक नए सिरे से लाए ये कुछ, तो अच्छा लगा. वाकई हाँ, उस टूर के बाद से ये जरा अंदाजा होने लग गया था कि यार द रियल issue over here is that Pakistan really struggles to get 20 wickets in test matches in Australia. Now, you could argue they struggle to get 20 wickets in test matches anywhere, जो हालात चल रहे हैं. But that would be veering away from the topic. I still have some fun nuggets over here. आपको पता नहीं, शायद पता है या नहीं पता, but सबसे पहला मैच पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया में खेली 1964 का दिसंबर था. They didn't lose it. They drew that test match and Hanif Mohammed scored 104 and 93. तो उस टाइम पे तो लोग बड़े खुश हो गए होंगे यार कि हाँ हम तो कर सकते हैं कुछ ना कुछ. I mean, like if you look at the 79, the 77 and 79 tours, so there's actually footage of that online also. So jo Sarfaraz Ahmed ki 7 for 1 at MCG, there's footage of that. सरफराज नवाज not Ahmed. यार मतलब उसका, sorry just to interject over here, but Sarfaraz is 9 for 86 at the MCG, वही 1979. Pakistan drew that series. 77-79 दोनों में टेस्ट सीरीज ड्रॉ की है. Graham Yallop रन आउट ना होते तो शायद सरफराज नवाज would have become the first bowler ever to take 10 wickets in an innings. उसका impact ऑस्ट्रेलिया में इतना
खतरनाक किस्म का था कि कई साल बाद स्टुअर्ट क्लार्क वाज निकनेम सरफराज. Like that's how much of an impact that had. Yeah, there's, a few, मैंने बहुत कम बॉलिंग देखी सरफराज नवाज की, but काफी जो ऑस्ट्रेलियन bowling है, he has a lot of that kind of the germs of that, in the sense that he was a really tall bowler जो back of the length कराता था. और obviously उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड सीरीज और उस सारे इश्यूज की वजह से टीम was not always full strength, or if it was, there was a lot of like upheaval. So there's that caveat as well. And exactly कि उसका काफी ज्यादा impact था. um, उस spell का भी, I think it play, if I'm not wrong, it used to play on Australian TV quite a bit also. What I remember मुझे ये हमेशा is one of the funniest post match interviews. Sarfraz, has taken these wickets और उसका interview ले रहे हैं और वो कहते हैं, Sarfraz, great job today, how are you going to celebrate? He's like, oh, nothing, just have a few drinks, soft drinks, because we are Muslim and we don't drink alcohol. And I was like, oh, that's amazing. He also had that big fuck off Australian mustache to add to Yes, that, right? yes, So he really definitely fits had the bill. the vibe going. So yeah, I think at that point there was maybe, like, it wasn't that crazy a result, but more importantly, जो हमने, unfortunately, in our lifetime we've really seen dominant Australian sides, right? Like, there were back-to-back generations of, probably, the Steve Waugh to Ponting Australia sides is one of the greatest of all times. और फिर उसके Hmm. बाद भी they've had, like, small dips, but जो सबसे ज्यादा मुझे दुख ये भी होता था कि जब उनका डिप आता था तो वो इंडिया से खेलते थे, और जब उनका राइज आता था तो उनका पाकिस्तान से टूर होता था. तो वो जो आप बात कर रहे थे ईएसपीएन वगैरह की, तो 2002 में या 3 में इंडिया गई थी, और शेन वॉटसन का भाई जो है वो, नहीं, ब्रेट ली का भाई शेन ली जो है वो मेन Shane Lee. बॉलर है, बेग्रा नहीं खेलता, वार्ड नहीं खेलता, ये फ्रंट का ना. और फिर 2004 में हम आते हैं और सब फुल फॉर्म में रेडी to destroy lives and livelihoods. So it was horrible. 72 पे ऑल आउट हुए थे ना पाकिस्तान, या मिग्रा ने कोई Yeah, 7 विकेटें ले ली थी. या लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट टूर. स्क्रू दैट. आई एम गोइंग टुवर्ड्स सम हैप्पियर मेमोरीज. ऑफ कोर्स 79 में थैंक्स टू सरफराज नवाज दे ड्रू दैट सीरीज. 77 में दैट वाज द फर्स्ट टाइम दे won a test match in Australia, right, and drew that series. Imran Khan is young. Imran Khan takes 12 wickets at the SCG, and Asif Iqbal scores 120 as well. अब इमरान खान की तो अपनी एक आर्क चल रही है पोस्ट क्रिकेट भी, बट विद रिस्पेक्ट हिज क्रिकेटिंग करियर, दैट कुड हैव बीन अ वाटरशेड मोमेंट राइट देयर. yeah. अगर आप इमरान की autobiographies पढ़ें, तो he's very clear about this. I think that's one of those things that इमरान the cricketer के बारे में इतनी इतनी special बात है कि this is Imran Khan. You can read this in, I forget the name. It was the only one I used to know. उसमें वो खुद clearly, he says that when he gets picked for the 75 tour, when he's still at Oxford, so he really doesn't know how to control his in swing, and he's a terrible bowler. And Imran doesn't say directly, but essentially Parchi hai, because his cousin was the captain of the side, Javed Barki. And so by the time Imran comes to play the Sydney Test and over the next few years, it's really a result of a lot of hard work. Like he says, when he plays that first tour and first series, and realizes that gulf of class between him and the others, he starts working really hard. And I think he probably, I've heard this from enough people to know for a fact that in terms of work ethic, like, very few people managed to match what Imran Khan did. और उसका आपको वही अंदाजा इसी चीज से होता है कि he wasn't as gifted as a Wasim or a Dar were. He was not a good bowler. And ये Sydney वाले test में he really kind of finds his space. And it's also kind of sad because from Imran, and इमरान के इस टूर से लेके until the World Cup के 15 साल जो है, तो उसमें पाकिस्तान काफी खेलता है ऑस्ट्रेलिया में, and he really, like, Wasim comes through on an Australia tour as well, and he's also amazing in that Australian tour. तो वो एक जमाना. Adelaide 1990. That's बिल्कुल what you're talking बिल्कुल. about. Wasim Akram scores a ton, Imran Khan scores a ton. The game is drawn with Australia requiring 71 runs with 4 wickets in hand. But Dean Jones not out था 121 पे. But yeah, you're very right to point out कि काफी ज्यादा खेलती थी पाकिस्तान उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया, and Imran had a huge Yeah. impact over there as well. Like
मैं जैरेड किम्बर से बात कर रहा था, एंड ही सेड दैट देयर वाज दिस स्टैंड अप कॉमेडियन हु यूज्ड टू मेक अ जोक दैट आई विल मेक लव टू यू लाइक अ या कॉर्नर टाइगर। वो तो यूट्यूब पे इस है तरह भी काफी वीडियो, बड़ा ना पॉप कल्चर में ऑस्ट्रेलिया में। यूट्यूब पे हम्म है वीडियो, बट ऑल्सो के लाइक व्हेन उस्मान एंड आई इंटरव्यूड वसीम अकरम, तो ही सेड कि हमने कहा कि आपको कब अंदाजा हुआ कि आप एक स्पेशल खिलाड़ी हो, और ही वाज लाइक मुझे यही था कि अगर ऑस्ट्रेलिया टूर में मैं अपना नाम बना सकता हूँ, तो मुझे मतलब सारे बड़ों ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ये वाले टूर है, अगर इसमें अच्छा परफॉर्म करोगे तो तुम्हारा करियर बनता है, एंड ही ऑब्वियसली हैज अ गुड टूर देयर। उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया के टूर पे लोगों का करियर सिर्फ तबाही हो रहा है। हम्म हाँ, और आई थिंक एक ऐसा टेस्ट मैच है, या जस्ट बिफोर आई एंड दिस वीडियो में व्यूअर्स को बताना ही चाहता हूँ कि पाकिस्तान हैव एक्चुअली डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया बाय एन इनिंग्स इन ऑस्ट्रेलिया। इट हैपेंड इन 1981, बट या देयर इज नॉट मच टू रिपोर्ट होम अबाउट with respect to the last 3 decades. And is the Fabi, Emir Bhai, I mean, you know, the PCB is in disarray. Pakistan cricket is in absolute shambles. Shan Masood is going to be leading the side in 3 tests in Australia, or Naseem Shah be injured. So, what do you think will be the biggest challenge? Is it the bowling? Because 20 wickets won't be easy in any test match. और क्या आपको कोई फ्रैक्शन ऑफ होप भी रख सकते हैं कि आप बस ना आई देखें? थिंक ये मैंने अब 2-3 दफा देख चुका हूं। मैंने और उस्मान ने जो बट्टा फास्ट हम लोग की पॉडकास्ट है उस पे हम्म ये गुफ्तगू की थी, और उस्मान ने ये बात की, और फिर मैं 2-3 दफा और भी लोगों से सुन चुका हूँ कि ना इस दफा इतनी कम उम्मीदें हैं कि कुछ उम्मीद है कि यार इससे बुरा तो हो नहीं सकता, तो शायद अब चांस बन रहा है। और ऑब्वियसली या पाकिस्तानी फैंडम की नेचर ही ऐसी है कि मतलब ये काफी लोगों के दिमाग में बात आ चुकी है कि मैन थिंग्स आर सो बैड दैट दे एक्चुअली कैन बी गुड। और आई थिंक उस सेंटिमेंट को एक और फायदा ये मिला है कि आज सुबह शान मसूद ने 150 बना दिए, तो अब तो सब लोग के हम्म भाई शान मसूद फॉर्म में है, ये है वो है। आई थिंक जो जो मसला आई थिंक 2016 में मुझे पहली दफा सही तरह अंदाजा हुआ था, और उसके बाद से चला जा रहा है कि 2010 is actually the Sydney test is the last time that you bowl well. So it's been like a decade and a half बेसिकली since we've bowled well. Obviously, we haven't played a lot of matches there, but वो तो दिखाई नहीं देता है कि आपके पास वो बॉलर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में लंबी स्पेल्स करा के अच्छा खेल सकते हैं। अब जैसे कि शाहीन आफरीदी है, आई थिंक आई वुड इमेजिन इन एन एब्स्ट्रैक्ट इन वैक्यूम के हाँ शाहीन आफरीदी बहुत अच्छी बॉलिंग कराएगा ऑस्ट्रेलिया में, मगर पाकिस्तान ने टेस्ट, वनडे, T20, मोहल्ले की क्रिकेट, ब्रायन लारा 96 सब चीज शाहीन को खिलवाते हैं, मतलब कुछ बच नहीं जाए कि वो वाकई। बच्चे अगर मोहल्ले में भी खेल रहे हैं तो जी शाहीन आफरीदी आप ये मैच भी खेलें, तो वो तो बेचारा उसका ढांचा बचा हुआ है। नसीम शाह वैसे ही आपने तोड़ दिया। हारिस रऊफ हम्म जिस जो बेचारा एक टेपिया है, वो T20 खेल रहा है, उसे उसको मतलब शौक भी नहीं है, तो वो सेलेक्टर जो खुद इन चीजों पे रोते थे और एनओसी मांगते थे, अब वो कहते हैं कि यार ये नहीं खेल रहा, वो नहीं हम्म खेल रहा। तो Yeah, that's rich coming from Wahab, coming right? from the entire खुद छोड़ी थी क्रिकेट। management committee right now, right? Like they've all fought with the board for the right to have more franchise cricket options. So एक तो ये मसला है, yeah. So I feel, I mean, मुझे no, I'm not in that camp कि यार इतने बड़े हालात हैं कि शायद अच्छे हालात हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बैटिंग चल सकती है, मेरे ख्याल में आपको शायद 1-2 100 देखने को मिले, बट ऑस्ट्रेलिया जलील ख्वार करके आपको हराएगा, मतलब उसमें कोई शक नहीं। और उसमें अगर शक होता भी तो बहुत अच्छा ये हुआ कि डेविड वार्नर साहब का सोचा जा रहा था कि भाई ये इनका फेयरवेल होगा, फिर मिचेल जॉनसन ने शोर मचाया कि क्यों मिल रहा है इनको फेयरवेल, तो allegedly सेलेक्टर्स ने कहा कि भाई तुम पहले टेस्ट में रन नहीं बनाओगे तो हम तुम्हें तीसरे में नहीं खिलाएंगे। So this अच्छा। is something was tweeted, people shared with me earlier in the day, which is, that's like David वार्नर को ये चैलेंज करना कि तुम पाकिस्तान के खिलाफ रन बनाओ इज लाइक चैलेंजिंग मी कि तुम जुम्मे के दिन बिरयानी खाओ, लाइक यस दैट्स गोना हैपन डूड। हमने एक आधा कैच भी छोड़ देना एक है, आई मीन हम उसको चांस नहीं देंगे। कैच, डीआरएस, अंपायर जो आप चाहते हैं वो सब कुछ होने को तैयार होगा। और मेरे ख्याल में बल्कि पाकिस्तान एक बहुत ही शानदार तोहफा देगा डेविड वार्नर को कि भाई फर्स्ट प्लेयर टू मेक 500 इन अ टेस्ट या समथिंग, 500 इन अ टेस्ट इन वन डे, लाइक प्रॉब्ली 90 ओवर का अंदर बनाने का।
और फिर पाकिस्तान 1.5 दिन में हार जाएगा या whatever. Like so, I think this is probably the worst tour we'll see in our lifetimes. Yeah, I mean, there's not much that suggests otherwise, but of course, one can hope against hope, I suppose. Shan Masood is going to be batting at number 3. Azhar Ali ने MCG में 200 मारा था. Shan Masood form में है. शान मसूदी कोई 201 मार दे यार, कोई मेमोरीज दे जाए. बट या आई मीन I आई mean, हैव शान मसूद एब्सोल्युटली और नो अजहर होप्स, अली बट 200 मार एट द दें, सेम आपने टाइम 450 बना दिए, फिर ऑस्ट्रेलिया 800 बना देगा. Okay. अच्छा, और ऑस्ट्रेलिया जीत कर भी आ रहा है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत कर आ रहे हैं. और आपने बात की ना मिच जॉनसन और वार्नर वाली चीज की, तो वो पाकिस्तान को होस्ट करने लगे हैं, तो वो भी जरा बिहेवियर भी पाकिस्तान वाला थोड़ा अपना लिया हुआ है ना, जरा एक आधी इधर शॉट मार दी, किसी को बात कर दी. बट एनीवे अमर भाई, आई थिंक दैट्स एवरीथिंग दैट वाज ऑन माय एजेंडा. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम. बहुत मजा आया आपसे ये सारी गुफ्तगू करने का. एंड देयर कुडंट हैव बीन अ बेटर कैंडिडेट टू टॉक पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया in this entire world than you. I don't know if that's a compliment, but like, but if Allah ने मुझे यही इसी राह पे डाला है, तो मेरा यही इम्तिहान है. इंशाल्लाह जब Yeah. क़यामत के दिन अल्लाह मियां हम सबको इसका अजर देंगे कि हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस देखे. Yeah, chale khair. Thanks once again for joining. It was an absolute privilege. And thank you, viewers, for tuning in for similar content. Stay tuned. Brought to you by Grassroots Cricket.